रवि सर की रिपोर्ट डाल दी है मैंने ग्रुप में, पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं रवि सर का चेक कर लूँ, because rest of the lectures are absolutely okay. Yeah. Very warm welcome to all of you in this online orientation program on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a 6-month long program which started in July 2020 and it will last till December 2020. This course is organized by Savitribai Phule Mahila PG Mahavidyalaya Sikar in association with Department of Geography, Government Lohia College, Churu, Department of Geography, Government Arts College, Sikar, and Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar. In this program, this is a 24th lecture in this series, and we are very happy that today we have a young researcher with us. She is Dr. Ellina Samantroy. She is fellow in Vivigiri National Labour Institute, Noida, under the Ministry of Labour and Employment. Very warm welcome, ma'am, in this program. And as per our schedule, first we will have a recap of the previous session, 5 minutes in Hindi and 5 minutes in English. So for the recap of previous session in English, I request Arpita Giri to present the report in English. Very good afternoon, everyone. The 23rd lecture of online orientation course on research methodology was organized on 10th of October 2020. The lecture was delivered by Dr. V. Sucharita on the topic titled Doing Ethnography in Qualitative Research. She is currently working with NUPA, New Delhi. In past, she was also associated with various prestigious institutions like IIM Bangalore. She also had vast experience of conducting ethnographic research, especially in school settings. The session was moderated by Dr. Renu Punya. The lecture was focused on both the foundation background and its conduct in the field. The speaker during the session cited her own experiences of conducting ethnography within the classroom setting, that is basically educational ethnography at relevant stages. She emphasized that ethnography is not new to social sciences, and for long it has been conducted under the domain of anthropology. However, due to its rich description and analysis, it is now gaining popularity in other social science disciplines as well. Thus, it becomes very important to understand the nuances of ethnography from conceptual basis to its application in the field. The lecture covers following points: meaning, origin, and types of ethnographic researches. It basically covers aim, rationale of ethnographic research, traditional ethnographic research conducted in rural setting to macro research, multi-stage to the latest trend in ethnographic research like virtual ethnography using online platforms to auto-ethnography, where field worker narrate her own experiences. Then she covered how to conduct ethnographic research into the field. She emphasized that entry and establishment into the field is very important component that can be only possible via continuous persuasion and rapport building. She further elaborate on how to maintain fieldwork notes, what to include and what not, its descriptive part and reflective part, and major areas of writing field notes. The lecture can be summarized under following points. Ethnographic refers to the practice of conducting a long-term detailed study of a community, social group, or social institutions. The data for ethnographic research can be obtained through observations. Ethnographic method allow researcher to obtain rich, depth, and detailed data about the subject to be studied. However, this method is also a time and labor-intensive exercise. The session was ended by question-answer session and summarized by Dr. Renu Punya, and also followed by a thank you note by Dr. O.P. Singh. She also suggested some following books like Remembering Village by M. Srinivasan, Life at School, Arrogant of the Western Pacific, Coming of Age in Samoa, Religion and Society Among the Folks of South India. Thank you very much.
JD sir. Yeah. Arpita, you are not audible, bete. No, she is finished. Okay, fine. Thank you, Arpita. Thank you very much. I thought that you'll little bit cover the question answer session that she has responded, very generously and all. It's fine. You have covered all aspects of the previous lecture. Now for presenting report in Hindi, I request Ayushi Jain. गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम आयुषी जैन है और मैं रेणु बाडरिया द्वारा तैयार 23वें व्याख्यान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गत सत्र में शुभेंदु मुखर्जी द्वारा इंग्लिश में और रेणु बाडरिया द्वारा हिंदी में गत व्याख्यान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। शोध विषय का 23वां व्याख्यान डॉक्टर पी सुचरिता द्वारा गुणात्मक शोध में नरवंश विज्ञान करना विषय पर दिया गया। उनके व्याख्यान के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार से हैं: नरवंश विज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति तथा प्रकार, नरवंश विज्ञान करना, नरवंश विज्ञान हेतु सुझाव और नरवंश विज्ञान शोध करना। डॉक्टर सुचारिता ने नरवंश विज्ञान का अर्थ बताते हुए कहा कि यह मूल या देशी दृष्टिकोण से जीवन के दूसरे तरीके का वर्णन करना और समझाना है। तत्पश्चात उन्होंने नरवंश विज्ञान के लक्ष्यों तथा इससे संबंधित दूसरी अवधारणाओं के बारे में बताया। नरवंश विज्ञान का सार यह है कि नरवंश विज्ञानी जहां अध्ययन कर रहा है वहां के जन समुदाय के साथ रहे। इसके बाद डॉक्टर सुचरिता ने नरवंश विज्ञान के तर्क को बताया। उन्होंने नरवंश विज्ञान तथा केस स्टडी के मध्य अंतर को स्पष्ट किया और नरवंश विज्ञान के चार प्रकार बताए जो निम्नलिखित हैं: पारंपरिक नरवंश विज्ञान, व्यष्टि नरवंश विज्ञान, समष्टि नरवंश विज्ञान और आलोचनात्मक नरवंश विज्ञान। प्रोफेसर सुचारिता ने नरवंश विज्ञान में नए प्रकारों व नई धाराओं का भी उल्लेख किया। नरवंश विज्ञान में आंकड़ा संग्रहण के विभिन्न तरीके हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार आदि। उन्होंने नरवंश विज्ञान के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करना, पक्षपातपूर्ण निर्णय न बनाना, छद्म नामों का प्रयोग करना इत्यादि सम्मिलित है। प्रोफेसर सुचारिता ने क्षेत्र के संबंध में सुझावों को लिखने का तरीका बताया, जो 2 प्रकार की क्रिया है: अनुशासनात्मक क्रिया एवं क्रमबद्ध क्रिया। अंत में प्रोफेसर सुचारिता ने नरवंश विज्ञान के महत्व को बताते हुए और विद्यार्थियों के प्रश्नों का संतुष्टि से जवाब दिया और सत्र का समापन हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद आयुषी, बहुत ही सुंदर सार प्रस्तुत करने के लिए। And now today we are having a very vibrant session which is on time use methods. These are the methods which are very much relevant for social science research, but unfortunately in most of this North India belt we are hardly using these methods. So today we have a very well-versed expert in this area, and that is none other but Dr. Ellina Samantroy. She is going to speak on time use methods. So without wasting any time, first I will greet the report writers of today's session. That is again Ayushi Jain. Today she has presented the report on behalf of Renu Bagadia, but she is also writing report today in Hindi, and in English report writing will be done by Monica Bisranjan. And now for today's session, for moderation, I request my friend Dr. Ravindra Kumar, and he will first introduce Ma'am Ellina, and then Ellina will deliver the lecture. So Dr. Ravindra Kumar. Thank you, Jitendra. Warm welcome to Dr. Ellina. Before inviting her for her lecture, let me introduce her to the participants. Dr. Ellina Samantroy is a working fellow at the Vivigiri National Labour Institute, which is under Ministry of Labour and Employment, Government of India. She did his MA, MPhil and doctorate from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Her interests of research are area of gender statistics, time use studies, work and family life balance, gender, work and social protection, child labor, labor regulations and international labor standards. She is the coordinator of the Research Center for the Gender and Labor at Vivigiri Institute. She has undertaken several research projects both with international organizations and at the Institute. She has also worked with the UNICEF, World Bank and ILO for different kinds of studies. There are a lot of studies done by her. She has published extensively, more than 45 publications in the form of books, research monographs, several papers and articles in peer-reviewed and reputed academic journals, chapters in edited volumes, book reviews, articles in newspaper and digital dailies. She has published a lot of publications
or research papers in international journals. To name a few: Indian Journal of Women and Social Change, SAG publications; Indian Journal of Labor Economics, Springer; Indian Journal of Labor Economics, Springer, India. There are a lot of journals given here. I am reading only a few. She has presented several research papers in various international and national conferences and seminars, including the International Conference on Long-Term Perspective on Home-Based Work at Stockholm, Sweden, the 30th International Conference on Time Use Research at Seoul National University, Korea, the 37th International Conference on Time Use Research at Ankara, Turkey. There are a lot given here. She has been a research person to several universities and institutions in India and delivered special lectures at National Academy of Statistical Administration, at Greater Noida, Jawaharlal Nehru University, University of Delhi, Ambedkar University, National Institute of Labor Economics, Research and Development, Arjun Singh Center for Distance Learning, Jamia Millia Islamia, Indian Institute of Public Administration, and Malviya Center for Peace Research, Banaras Hindu University. She has also delivered video and radio talks for National Institute of Open Schooling and radio talks for Gyanvani for IGNOU. She is also involved in reviewing and developing academic curriculum and e-content of various universities and institutions in India. It was a 3-page long biodata. I have picked a few lines from this, and now I invite Dr. Ellina Samantroy for her lecture. Ma'am, the board is yours. Thank you so much for the generous introduction. And first of all, I would like to thank the Savitribai Mahila Mahavidyalaya for inviting me, and particularly Dr. Jitendra Soni for inviting me to this extremely enlightening forum with young scholars and professionals already here in the group. I'm sure that I would be having a wonderful time interacting with all of these young minds today. Thank you so much once again. And I would also, I'm very grateful that at least I could see now more than 127 people have joined, 28 or 29 people have joined already for this program on a Sunday. And that really shows how this program must have been and how successful it is. So thank you so much. And I would try to do a screen share. I have a presentation for the participants, and I have also shared some of the readings for the participants, which can be shared later by Dr. Jitendra. And today I'll be speaking mostly on time use methods. Before I start, just let me try to share the screen and see if I'm able to reach my, can you see my screen? No, not yet, ma'am. It was, ma'am, लेकिन बीच में disrupt हुआ और again okay, your screen has gone. Let me just open the presentation. Yeah, I think now it should be okay. Is it okay now? Yeah, ma'am. Yeah, yeah. Yes, it is okay. Ellina, mind this, that you have to be bilingual for the entire session. Yeah, I remember that very well. I have to be bilingual. Thank you for reminding. Okay. Whenever I'm not bilingual, please point it out in the chat box. I would request all the participants, अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोल दे रही हूँ, तो आप जरूर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा और हैंड रेज कर सकते हैं अगर ऑप्शन है तो मैं फिर अपने आप को रोक के I'll try to do it in Hindi as well. So I'll be speaking today on time use methods, basically for understanding labor and employment data. भारत में श्रम बाजार का जो डेटा है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा है, उसको समझने के लिए एक मेथड के बारे में बात करेंगे. This is basically a survey. These are actually surveys, time use surveys. But before I start, I would like to know from the audience here that whether they have any previous idea about time use surveys or not. अगर कुछ ideas उनको है तो chat box में डाल सकते हैं या वीडियो ओपन करके अगर ऑप्शन है तो बोल सकते हैं.
Is anyone aware where they have heard about these surveys earlier? And they can only give in chat box. If you can give in chat box also, it would be okay. Some I got a no. Some people no mana kar rahe hain. Okay, fine. I got a brief idea that most of you don't know about it. These surveys, before I start, I'll give you a background actually. Why these surveys, what are these surveys meant for? क्यों हम इन सर्वेस को करना चाहते हैं या क्यों अभी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में ये सर्वेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सर्वेस बहुत इंपॉर्टेंट है, why these surveys are very important, particularly now when we are witnessing a decline in labor market scenario in the country, particularly for women. So आज का जो लेक्चर है वो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे. We'll be looking into employment trends basically, national and international scenario, indicating or identifying invisibility of women's work. And यही कारण है कि महिलाओं का जो काम है भारत में वो अदृश्य होता है mostly. It is invisible and it is not accounted adequately in national accounting statistics. हमारा जो national account statistics है उसमें सही तरीके से इनका आंकड़ों को नहीं गिनते हैं या नहीं कैप्चर करते हैं. और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और नहीं करने से क्या इम्प्लीकेशन होता है और तभी टाइम यूज सर्वेस का रेलेवेंस आ जाता है. सो द बेस्ट वे ऑफ कैप्चरिंग, फर्स्ट हमें ये अग्री करना होगा कि टाइम यूज surveys इसलिए है because we have not adequately captured women's work in national accounting statistics, and that is something which many countries across the world have already done it, including countries in the Asian context, even in South Asia per se. If you look at Bangladesh भी टाइम यूज सर्विस करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमने पायलट सर्वे 98-99 में किया था टाइम यूज, एंड उसके बाद हमने रिपीट नहीं किया है. 19 में हमने नेशन वाइड सर्वे लॉन्च किया है जिसका रिजल्ट्स अभी अवेटेड है. मैं ये सारा बताऊंगी आपको बिफोर आफ्टर आई इंट्रोड्यूस व्हाट आर दीज टाइम यूज सर्वेज, बट डेफिनेटली यस, इट हैज गॉट अ लिंकेज टू कैप्चरिंग ऑफ वर्क. और जो काम है उसको सही तरीके से कैप्चर करने के लिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विमेन्स वर्क पर्टिकुलरली, जैसे कि भारत में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और डेवलपिंग नेशंस, वेयर देयर इज subsistence work or where there is informal work जो preponderance में है, which is very high in India, and I'm sure most of you must be knowing about it that भारत में more than 90% of workers are in the informal sector. 90 से अधिक प्रतिशत वर्कर्स असंगठित क्षेत्र में है भारत में और सबसिस्टेंस वर्क करते हैं. विमेन बेसिकली who are a considerable share or who represent a considerable share of this population, they are mostly engaged into your subsistence employment. And problem क्या होता है, क्यों ये सर्विस की हम बात करेंगे और क्या जरूरी है बात करना भारत के कॉन्टेक्स्ट में या डेवलपिंग नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, ये हम थोड़ा देखेंगे. बिकॉज पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत से ऐसे काम, पर्टिकुलरली सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्टली विच आर ऑफ इनफॉर्मल इन नेचर, those employments are not captured adequately in national accounting statistics. उसके भी कारण है क्यों एडिक्वेटली कैप्चर नहीं हो पाता है नेशनल अकाउंट्स में, क्या प्रॉब्लम है कैप्चर नहीं होने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी. भारत में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए, और अगर हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है. सो ये स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पैक्ट है ये आपके जेंडर इक्वालिटी पे डेफिनेटली पड़ेगा, इन एडवांसमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी. सो व्हेन वी हैव better statistics or when we have better statistics for capturing both men and women's work, I would also bring in men into the entire discourse today. सभी मतलब जो बच्चे भी इसमें आते हैं, these are very important for capturing child labor also, क्योंकि child labor में भी हम बहुत से ऐसे काम even after the amendment which we have done recently, CLPR Act का, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे काम है जो बच्चे करते हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है और उसको चाइल्ड लेबर के दायरे से वो बाहर हो जाता है. सो पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन जो डोमेस्टिक ड्यूटीज अटेंड करती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. नाउ मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट विथ
what are these statistics and why it is important, भारत में हम कैप्चर क्यों नहीं कर पाए हैं, इन सब को जानने से पहले मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको लेबर मार्केट सिनेरियो को दिखाना चाहूंगी, which is a very recent report of the ILO, जिससे I hope the screen is visible clearly, जिससे आपको दिखेगा कि 2018 में जो एक ILO का रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, 19 का जो रिपोर्ट है वो मोस्टली 18 का डेटा को यूज किया है. सो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है ये दो पेरिनियल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है. One is a huge gender gap in the labor market participation, and the other one is low participation of women in the labor market. So these are two pressing challenges in the labor market worldwide. पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे, वेयर यू हैव अराउंड 75% men participating in the labor market, you will have only 48.5% women participating in the labor market. तो महिलाओं का जो भागीदारी है वो कम है पुरुषों के मामले में वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे. सो ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो अराउंड 26.5% लेस है in comparison to men. Or 3 regions or across the world rather, if you see, the Arab states, Northern Africa and Southern Asia, ये तीनों regions आपके जो है ये आपका लोएस्ट पार्टिसिपेशन को बताता है. एंड ये डेफिनेटली ह्यूज गैप को भी बताता है. सो द गैप इज मोर देन 50 percentage points and the participation rate is as low as 30 percentage points. So and these are like the Arab states, Northern Africa, Southern Asia and South Asia particularly. If you see, there is a participation of women at 27.6%, which is quite low if you look into the global average. So ILO बहुत estimates करता है कि जैसे these are like future projections कि आगे क्या होने वाला है. So if you look into developing countries particularly, अगर आप clearly देख सकते हैं इस particular slide को, labor force participation और gender gap, you can see that particularly Southern Asia में अगर मैं आती हूँ, see the gap which is around 51.4%. If you can see Southern Asia here, it is 51.5% gap between men and women participating in the labor market. So this is a big problem, particularly in countries which are developing and countries which are marked with informality. मतलब जिन देशों में जो developing देश है और जहाँ पे असंगठित क्षेत्र की संख्या बहुत ज्यादा है, उन देशों में इस तरीके का गैप आना बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है. एंड मैं ये आपसे मतलब जानना डेफिनेटली चाहूंगी कि क्योंकि मुझे अक्सर ये सवाल करते हैं कई सारे लोग कि महिलाओं को काम नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, उनको घर का काम ही संभालना है. तो ये बहुत ही आम सी बात है. अगर इंडिया में लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन डाउन हो जाता है तो दे मस्ट बी डूइंग हाउस होल्ड वर्क विच इज क्वाइट नॉर्मल, कीपिंग इन व्यू द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये बहुत से आर्ग्यूमेंट्स में आए दिन हम लोग के इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे लोग आते हैं और बताते रहते हैं और समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. नाउ क्यों जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है उनको काम पे लाना? As I already mentioned, we have a commitment to sustainable development goals for achieving the global sustainable development goals. So all of you are aware, I'm sure, about the global SDGs. Goal 5 gender equality हमें हासिल करना है, and also to a large extent goal 10 which is reduced inequalities, which also talks about reducing the gap in labor market also and amongst all communities, all social groups. ये बहुत important है. Now under this particular goal, goal 5, there is a specific target of the UN SDGs जिनको हमें 2030 तक हासिल करना है. So now this target is recognizing unpaid work. And to achieve gender equality, one specific target is about recognizing unpaid work. So जो महिलाएं काम करती है, जो अवैतनिक है, unpaid work is something which is not paid, which is not recognized, which is not remunerated, which is not accounted for in national account statistics. So when you look into particularly unpaid work, and if you contextualize India's women, you will see that mostly, many of them, they don't participate in paid employment because of constraints of unpaid work. Paid employment में नहीं आने का एक अहम बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि वो
अवैतनिक कार्य बहुत कर लेती हैं, और वो बहुत कल्चरल है और बहुत ही स्ट्रक्चरल है, वेरी वेरी यू कैन से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय सोशो कल्चरल अरेंजमेंट्स। हमारा इस तरीके का सोशो कल्चरल अरेंजमेंट्स है कि ये बहुत नेचुरलाइज्ड, बहुत नॉर्मलाइज्ड, और रादर यू कैन से इट लुक्स वेरी वेरी नॉर्मल दैन एनीवन टू क्वेश्चन अबाउट इट। तो इसके ऊपर कभी कोई ज्यादा सवाल नहीं होता है कि महिलाएं काम करती हैं इस तरीके का, क्योंकि वो विमेन है। सो एंड दैट कॉन्स्ट्रेंट्स देम from participating in full-time paid employment. Now, this particular target, which is 5.4, it talks about an important aspect actually, and that is valuing care and any kind of domestic work and the public provisioning of care services. And it also says that isko karne ke liye there are certain indicators one has to look at. And what are these indicators? Is that the percentage of time spent on unpaid domestic care work by sex, by age group, by location. So कहने का मतलब ये है कि अगर एक वो 40 साल की महिला है तो उसका डोमेस्टिक ड्यूटी, एंड शी हैज यंगर चिल्ड्रन बिलो 10 years और चिल्ड्रन बिलो 12 years of age, तो उसका केयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है दैन इफ शी हैज एडल्ट चिल्ड्रन और जो खुद अपना केयर कर सकते हैं. सो इफ यू लुक इनटू सर्टेन एज ग्रुप्स पर्टिकुलरली, और विमेन who have been staying in geographically remote or isolated areas, which has got a bad transport, which is not connected properly with roads. इस तरीके की जगह पे अगर कोई महिलाएं रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसे बहुत सी जगह है जो डिस्कनेक्टेड है पहाड़ी इलाकाओं में, एंड वहाँ पे महिलाएं द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक फील्ड वर्क करने गई थी त्रिपुरा में, उनके हिल्स और उनके गांव में, प्लेन्स में, एंड इट वाज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द हिल्स एंड द प्लेन्स. महिलाओं का जो काम है वो अलग अलग हो जाता है हिल्स और प्लेन्स में, बिकॉज हिल्स में उनका फ्री कलेक्शन ऑफ मेनी ऑफ दीज forest related activities is there, then they have shifting cultivation, then they have household work. तो ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, and by age group it varies, by geographical location it varies. So it's very important to keep in mind all of these indicators if at all we are thinking about an assessment or thinking about capturing women's work adequately. So this is what the UN SDGs very specifically highlighted, that any country who's looking into advancement in gender equality or moving towards achieving gender equality, you cannot deny, ignore unpaid work at all. इसको हम इग्नोर या डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना और इसको कैप्चर करना. Now this is just a background, so why it is important, and I already mentioned that because of unpaid work women are unable to participate in paid employment. ये बहुत major constraint उनका हो जाता है. If you see global reports like this, ये एक बहुत ही interesting report ILO का आया था called Care Work and Care Jobs, the Future of Decent Work. This particular report highlighted that men in most of the parts of the world, they do not perform unpaid work at all, and women dedicate on an average 3.2 times more time in unpaid work than men. which is around 4 hours 25 minutes against 1 hour 23 minutes for men. ये ग्लोबल पिक्चर है, बट अगर आप भारत का देखेंगे, भारत में तो आधा घंटा भी नहीं करते हैं. टाइम यूज सर्वे हमारा ओनली 98-99 में हुआ था, उसी से पता लगेगा कि कितना घंटा करते हैं. सो जब आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, और कोई भी कंट्री वर्ल्ड में नहीं है जिसमें मेन एंड वुमेन इक्वली अनपेड वर्क करते हैं. दो वी कैन से दैट द नॉर्डिक कंट्रीज, द यूरोपियन यूनियन, दे हैव वेरी गुड प्रोएक्टिव पॉलिसीज ऑन ब्रिंगिंग फादर्स इनटू द एंटायर केयर डिस्कोर्स, जिसके वजह से उनका जेंडर गैप लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में कम होता गया है. सो जैसे स्वीडन एक एग्जांपल है, वहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम है, but we cannot compare because size of the country and everything is very different. But yes, I mean these are like good examples to share with you all that ऐसा है. I mean this is what is the situation. And सबसे problematic बात जो इस रिपोर्ट ने रेज किया, जो मुझे लगा हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है, is that 606 million women of the working age have declared themselves to be unavailable for work or employment or not seeking a job due to unpaid care work. Jabki men, only 41 million men are inactive for the same reason. So you can see that 606 million women जो working age में हैं,
वो अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज उनके पास अनपेड वर्क का बर्डन इतना ज्यादा है. So that's why it's very important to address this particular issue when we are looking into labor and employment data sets, and if we are looking into larger discourses on advancement of gender equality, etc. Now, employment trends in India, definitely. Let's have a look at the labor and employment data, and then we talk about time use surveys on and see why. I mean, what are the problems with this data, these data sets? I mean, how these data sets can be enriched further. किस तरीके से इन data sets को हम और enrich कर सकते हैं, उस पे ही आज हम लोग बात करने ही जा रहे हैं. So if you look into the employment trends, the declining female labor force is something which I already highlighted, and I'm sure आप सभी को पता होगा that the female labor force in the country is declining, has been declining at least till the periodic labor force survey 2017-18. आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता कि पहले हमारा EUS होता था, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेस हुआ करते थे, जो क्विंक्विनल राउंड्स थे एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, और 5 साल में आते थे. बट 2017-18 से फ्रॉम 2017-18 onwards we have these annual periodic labor force surveys, and now we have 2 rounds of it already out. So थोड़ा वेरिएशन है दोनों में. I mean, if you look into the data per se, 15 years and above का अगर आप देखेंगे, over this is a comparison, this includes your EUS, the employment unemployment service, and the periodic labor force service. तो अगर आप इसको clearly देख पा रहे, you can see how the female labor force is going on declining. But in rural India in 2018-19 there is a marginal increase, जिसको हम marginal increase कहते हैं. Urban areas में कोई भी difference नहीं है. Overall अगर आप देखेंगे there is a marginal increase. That's because of the rural thing happening. Now we should not be very happy because अभी तक हमारा जो डिक्लाइन है उसके कई डिबेट्स रह चुके हैं, एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज डिबेट्स. एंड जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट किया था 2004-5 में, तो बहुत प्रोमिनेंटली बहुत से देयर इज लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्सेज ऑन द डिक्लाइन की एजुकेशन बढ़ रहा है, प्राइमरी एजुकेशन इंप्रूव हो गया है, सो गर्ल्स माइट बी इंटरेस्टेड टू गो फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसलिए लेबर मार्केट में नहीं आती है. हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स आ गया है, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन हो गया है, इसलिए महिलाएं नहीं काम करती है बिकॉज पुरुषों को काम मिल गया है, and lot more. But I agree, I mean, with due respect to all of these debates, I mean, jitne bhi debates, there is one prominent debate for the decline which the gender statisticians bring forward, and that is statistical invisibility. Scholars like Adriana Meta Greenwood, many scholars, even Indian context में Indra Harve, इन scholars ने highlight किया है कि ये डिक्लाइन जैसा है वैसा शायद नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने महिलाओं के कई काम को तो अभी तक कैप्चर ही नहीं किया है. We have not considered most of the activities which they do as work. So ये जो decline है, it's definitely a problematic decline, and also there is statistical invisibility coupled with it. I mean, इसके साथ statistical invisibility भी है. But marginal increase जो हुआ है periodic labor force survey 18-19 में, इस पे अभी मैं हाल ही में काम कर रही हूँ. बट जब हम डेटा सेट्स के अंदर जाते हैं और इफ यू लुक इनटू यू नो ऑल द यूनिट लेवल डेटा, यू विल सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो ये जो इंक्रीज है ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा इंक्रीज नहीं है, बिकॉज एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स women do not have social protection, women do not have access to labor regulations. So ये दो कारण, ये दो problems है जो whole informal sector को labor regulation के ambit से बाहर कर देता है, and ये एक बहुत बड़ा problem है. अभी हम भी उसके साथ grapple कर ही रहे हैं, और बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के पास इसको डील करना कि हम कैसे बहुत सारे लोगों को जो फॉर्मल इनफॉर्मल में है उनको लेबर रेगुलेशन के अंदर लाए या सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के अंदर लाए. सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू डू इट एडिक्वेटली. The government is trying very hard for it, but it becomes very difficult. Now, this is a decline. The debates, earlier debates for the decline still holds true, I would say, at this point, that abhi jo marginal increase hua hai, wo hum maan hi nahi rahe, because at the same time, there is a corresponding parallel increase in self-employment. So, इसीलिए ये खुश होने की बिल्कुल बात नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है भारत में. ये तो नेक्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस आएगा, हर साल तो हम देख के बता पाएंगे ट्रेंड किस तरीके का हो रहा है, किस तरीके का काम वो पा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट
broadly, if you look into even the work participation, labor force participation में क्या है, unemployed people are also included here. But in workforce participation, this is actually working population who are drawing wages. तो इसमें भी वही same scenario है, कोई difference नहीं है. मैं अभी बात पे आ जाती हूँ to how to deal with this situation. That is how the time use surveys come into the picture. Now, this is definitely a big problem. Of the the declining female labor force participation, which I would say still holds true in the Indian context. Even if there is a marginal increase, it is not considered a great increase. That is true. ये बात सच है. But now, why women's work has not been captured adequately? There are two problems. One is the methodological issue, and the other is the definitional issues. Now, the definitional issue is means the concept of work per se. जो कार्य का definition है, वो हमारे national account statistics में include करता है only market activities. Market means purely economic activities. So जो non-market activities है, rather you can say those activities which may be indirectly contributing to GDP also, those activities does not get captured within the definition of the term work. सो कार्य के डेफिनेशन में नॉन मार्केट एक्टिविटीज आते ही नहीं है, इसलिए छूट जाते हैं. नाउ आप सभी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वुड एग्री विथ मी that women generally do these non-market activities. Even if it is a home-based worker and she's working in a home-based setting and selling her stuff to the middlemen, she's nowhere counted because there is no employer-employee relationship happening. She's selling the stuff to the middlemen, and that entire labor market activity does not get reflected anywhere. So she is outside the purview of social protection. She is outside the purview of labor legislations, जो एक बहुत challenging situation है और बहुत difficult situation है women के लिए. So one is that, and the other is methodological issues. What are these methodological issues? The methodology of capturing work per se, be it a man's work or a woman's work, किसी का भी काम हो. I'm not focusing only on women here. I'm saying अगर किसी का भी काम हो, टाइम यूज सर्विस इसलिए आया क्योंकि महिलाओं का काम बिल्कुल अदृश्य हो रहा था, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में आया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. But time use surveys are best tools to capture all kinds of work, be it a man's work, a woman's work, an elderly person's work, a child's work, anyone's work. So methodological issue is that the entire collection strategy of data collection strategy which the national accounts adopt does not have a gender sensitivity to it actually. By this I mean, for example, अगर मैं एक NSS की collector हूँ, data collector हूँ, और मुझे उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला के घर में जाके सर्वे करना है, okay, and I have to ask कि वो क्या काम करती है. And if I'm a man, for example, one is that she may not be coming in front of that man because she has a big barrier of the gender thing coming in, because I'm a woman and I won't be coming in front of stranger men. Second is she has got a whole caste barrier coming also, that if it is a so-called, I mean जो हमारे इंडिया में caste practices भी बहुत rampant है और वो prominent है अभी भी, if the man belongs to a different caste altogether, which is considered a superior caste than hers, which in India में हम categorize करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, but unfortunately हम ये सब categorization और hierarchies करते रहते हैं. और अगर हम इन हायरार्कीज को बिलीव करते हैं तो वो डेटा कलेक्टर के पास और भी नहीं जाएंगी, बिकॉज शी माइट हैव दोस restrictions imposed by her caste location. So when we look into these methodological issues, and if the data collector is not a woman, अगर एक महिला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और आप खुद महिला नहीं है तो बहुत सी चीजें वो बताएंगी भी नहीं अगर भी सामने आ जाती हैं. So due to these issues, she may not be comfortable or the data collected may not be adequate or appropriate. एक misrepresentation हो जाएगा for reality. So rather gender statisticians would say that this is a distorted perception of reality. जो सच्चाई है उसका एक distorted perception बता दिया गया है, जो वास्तव में सच्चाई नहीं है.
जैसे मैं अगर किसी के पास गई और मैं देख रही हूँ घर में है और मैं उनको पूछ रही हूँ आप घर में क्यों हैं, बाहर क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो बता देंगी कि नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे मेरे इतना बड़ा परिवार है, नहीं करना चाह रही हूँ। बट अंदर और क्या प्रॉब्लम्स है, क्या काम उनको दिया जा सकता है, उनके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है जो नहीं करना चाह रही है, ये इनविजिबल डिमेंशंस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते. एनएसएस इज नॉट that much gender sensitive to capture all of this. मैं इसलिए ये सब आपको कह रही हूँ कि ये सब बाकी देशों ने कर दिया है, इस तरीके का डेटा कैप्चरिंग they have done it. And if you look into Eurostat, if you look into IStat, or rather Asian nations में अगर आप कोरिया का statistics देखेंगे, कोरिया co-stat, आप इन सबको देखेंगे तो इनका क्वेश्चनर्स बहुत अच्छा है. इवन आपका स्वीडन का अगर आप क्वेश्चनर खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडियन क्वेश्चनर में अभी बहुत कमियां हैं, बहुत चीजें हम पूछते नहीं है अपने पॉपुलेशन को, तो हम जान नहीं पाते उनके बारे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ये हमारा प्रॉब्लम्स है. आई मीन नाउ वी आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. वी हैव अ लो पार्टिसिपेशन, वी हैव हाई इनफॉर्मेलिटी, we have people doing subsistence work, informal work. We have not captured all these kinds of work adequately. And for that, what do we do? I mean, unpaid work definitely needs to be captured. And for that, there is the best way, because बहुत से feminist economists like Ellina, जिनको मैंने यहाँ quote किया है, if you see, that they say that she says that it's very important that these statistics get accounted. And the whole of feminist discourse, particularly the feminist economists, they have led a call that please try to take it into account. One before even if you're not remunerating, there's another side, there's another group of feminist scholars who talk about remunerating unpaid work. But there are other groups of scholars who say that even if you're not remunerating, try to recognize, at least you will be able to know why they are not participating in paid employment. आप चाहे जितना स्कीम कर लो, वो नहीं अवेलेबल होंगी और उनकी अवेलेबिलिटी का कारण भी आपको नहीं पता, और आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो महिला है, ये सब काम करना पसंद ही करती होगी, घरेलू काम. तो ये सही नहीं है कि सारी महिलाएं, जैसे एल्सन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट दिया था जो मुझे याद आ रहा है कि caring does not mean loving doing it. Every woman would like to do care work. It doesn't mean like that. It doesn't appear like that. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या वो वास्तव में करना चाहती है या वो कॉन्स्ट्रेन्ड है, उसके पास कई बाधाएं हैं. शी इज constrained to do that kind of employment. So now if you see that across the world, the low and middle income countries, if you see, the unpaid work share for women has been increasing. And if you look, it's more than 460 minutes for more than 260 minutes for women, though men do participate less average on an average. So time spent on unpaid work is definitely high, and that needs to be captured. I mean, I'll tell you the other uses also of time use surveys, but time use surveys, when they started, they have a long history. But Beijing conference ke baad, the World Conference on Women, after that conference, they realized that time use surveys can help to capture women's unpaid work better. So uski wajah se market and non-market activities, as I was telling you, that हमारा methodology only, definition only market activities को capture करता है, but non-market को छोड़ देता है, जो एक अहम हिस्सा है काम का, और हम उसको ignore कर देते हैं. So time use surveys जब 26 OECD countries में हुआ था, ये 12वें OECD ने एक बहुत interesting report निकाला था. उन्होंने ये बताया था कि women devote more than twice time on household work as men. So, and that really needs to be captured. So employment data, what does it reveal? It definitely does not give us a true picture of reality. It gives us a distorted perception of reality. As I was telling you, कि ये जो सच्चाई है उसका एक अलग ही रूप बता देता है employment data, और जिसके इर्द गिर्द हमारे पॉलिसीज और नीतियां बन जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट पॉपुलेशन को फिर केटर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो एडिक्वेटली उसका इम्पैक्ट नहीं रह पाता है, बिकॉज आधी चीजें हमें पता ही नहीं होती है. सो जनरली क्या होता है, एक विशियस सर्कल ऑफ इनइक्वालिटी परपेचुएट हो जाता है बार बार, और हम उस इनइक्वालिटी के सर्कल में घूमते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली विदाउट नोइंग what men want and what women want. So that is the big problem in India which we are facing now, and gender statisticians like Adriana Meta Greenwood,
ने कहा कि कन्वेंशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स इस चीज को नहीं देख पाते, इसीलिए टाइम यूज की जरूरत पड़ती है. सो जब हम कन्वेंशनल लेबर फोर्स सर्विस को जाते हैं, उनके क्वेश्चनर्स इतने भी आप कह सकते हैं उनका स्कोप इतना भी वाइडन नहीं है कि बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है. सो इट कैन नॉट बी, दे नॉट इनफ इन द स्कोप और टू गिव यू इन डिटेल अबाउट द टारगेट पॉपुलेशन. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड for doing a time use survey. Now coming to the time use surveys directly, what are the significance of these surveys? Now time use statistics या time use methods or time use surveys are very important because हमारा एक 19th ICLS International Conference on Labor Statisticians 2013 में हुआ था, जिसमें ये लेबर स्टैटिस्टिशियंस का ग्रुप है. They keep meeting and they recommend countries for improving their labor and employment data. और 13 में ही उन्होंने ये बात कह दिया था कि it's very important to shift from purely market capturing of market work to capturing non-market work as well. If we are at all talking about gender equality, or if at all we are talking about any kind of development in any country, we have to capture both market and non-market activities. So it's high time we move beyond our traditional definition of the term work and expand it a bit further. So हमारा जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड करने की बात उन्होंने कही थी. और 18 में जो रिसेंट है, द लास्ट वन, the recent one 2018 में सेम बात को reiterate किया गया. They again reiterated, they said that a comprehensive measurement of participation in all work activities including paid and unpaid among other dimensions of well-being. So it also includes other dimensions of well-being, जैसे कि आपका paid work हो गया, unpaid work हो गया, and leisure, that is also equally important, whether you get enough time for leisure or not, because that has got a direct connection to your well-being. And women, आपको पता, आप लोगों को, कई लोगों को पता भी होगा, अगर आप NFHS डेटा यूज करते होंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, और अगर आपने देखा होगा, मैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट उनका देख रही थी पर मुझे बहुत शॉकिंग लगा. उसमें आया है कि महिलाएं कैसे टाइम, मतलब कैसे क्या क्या करती हैं बेसिकली, और उसमें था कि विजिट्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो है वो पुरुष ज्यादा करते हैं देन विमेन. So women don't get time to even go for their own well-being, even talking to a friend or chatting or even going to any other doing any other activity or pursuing a hobby rather. अगर वो एक hobby करना चाहती है, गाना गाना, music या art या whatever, वो नहीं करने का time नहीं मिलता है because they are overburdened with work, paid unpaid work, and that is very important to address, because I again and again say that it is very critical because ये काम उनको adequate labor market choices करने में पीछे खींचता है. They do not have choices. They are unable to make choices because they have this huge invisible burden on them. और ये 20th ICLS जो मैंने 2018 में लास्ट हुआ था, उन्होंने क्लियरली और स्पेसिफाई कर दिया लेबर स्टैटिस्टिशियंस ने कि हमें स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना चाहिए, those statistics which also tell you about the reasons of preferring a non-permanent job. मैं आपको यही बात बार बार कह रही थी कि हमने कभी पूछा नहीं उन महिलाओं को कि आप पार्ट टाइम वर्क करना क्यों चाहती हैं. जब आप NSS का आंकड़ा देखेंगे तो मेजॉरिटी महिलाएं रेगुलर पार्ट टाइम जॉब मांग रही हैं than regular full time job. So if we have not gone beyond that questionnaire to probe further into an additional question of asking them why are you saying so, rather हम उनको ये सवाल पूछ लेते हैं कि इसलिए नहीं किया, बहुत ऑप्शंस है, वाटर टाइप क्वेश्चंस है कि स्किल नहीं है, पैसा नहीं था, एंड अदर्स. और ये बहुत इजी ऑप्शन होता है उनको अदर्स में टिक कर देना, बिकॉज बाकी चीजें काम नहीं हो रहा है तो अदर्स में टिक कर दिया. यू नेवर नो दैट शी माइट बी डिसाइडिंग इन अ ज्योग्राफिकली रिमोट एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा आने के लिए एम्प्लॉयमेंट पे, वो एक बाधक हो सकता है. फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम बिताती होगी, वो एक बाधक हो सकता है. एल्डरली केयर, घर में बहुत से घर में बुजुर्ग लोग होंगे जिनको केयर की जरूरत है, उनका केयर करती होगी बच्चों के केयर के साथ, तो वो भी एक बाधक बन सकता है. तो ये सारी चीज हम बिल्कुल पूछते ही नहीं है. So when we don't ask, we don't know about whether why they are not available for paid employment. So this recommendation very clearly highlighted that please ask this question in your labor force questionnaires, that why are you seeking a non-permanent job. जैसे इंडिया एक glaring example है.
इंडिया में वो 60 से ज्यादा % महिलाएं बता रही हैं कि हमें पार्ट टाइम, रेगुलर पार्ट टाइम दे दो, रेगुलर भी चाहिए, पार्ट टाइम भी चाहिए. सो इससे क्लियरली पता लगता है दे वांट एम्प्लॉयमेंट, दे आर पुअर, दे आर इनटू द इनफॉर्मल सेक्टर, बट दे डोंट वांट अ रेगुलर वन बिकॉज देयर इज नो वन टू बैलेंस द अनपेड वर्क. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसलिए इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन के साथ कंपेयर करना, कंबाइन करना, एम्प्लॉयमेंट को पेंशन के साथ कंबाइन करना, employment with unpaid care for children you combine, and combine employment with other family responsibilities. Then you will get a true understanding about why a particular man or a woman, whoever it is preferring a non-permanent job, why they are not preferring a permanent job. Ye tab pata lagega, and then at least you will be addressing the issues, larger questions of well-being and SDGs. Now, for this, the best tool is the time use surveys. So मैं इसको करने से पहले थोड़ा इसका हिस्ट्री बता देती हूँ. जब ये back, if you look into little bit of early developments, ये 1900s में short leisure hours of industrial workers का कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता था. They were using it for that, and it was used in UK, US in living and working class families basically. But धीरे धीरे क्या हुआ, I mean this was confined to that, and एक Finnish time use expert है इरिस नीमी, उन्होंने ये अपने स्टडीज में कई बार हाईलाइट किया है कि ये शॉर्ट लीजर आवर्स को ही कैप्चर करने के लिए पहले यूज किया था. एंड फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब कंट्रीज में दे हैड अ लॉन्गेस्ट ट्रेडिशन ऑफ time use, and what they were capturing, whether workers got leisure or not, whether they have leisure time or not, ये करने के लिए किया जाता था. Later जो countries है जो उन्होंने highlight किया है, like Soviet Union, UK and USA, they have the longest history. 20s and 30s में diaries use किए जाते थे. Time use surveys are done through a time diary. एक टाइम डायरी मेथड से किया था, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है. सो टाइम डायरीज यूज किए जाते थे to investigate non-market activities. As I was telling you, this is exactly the recommendation of the 19th International Conference on Labor Statisticians कि आपको non-market activities को भी capture करना है. तो ये तब भी होता था जब farm families, urban living patterns, lifestyles, ये सब unemployed का वो लोग capture करते थे. But one of the prominent Hungarian sociologists, Alexander Zalai, you can say that he is someone who has established the time use research actually, because इन्होंने एक multinational comparative time budget research project लिया था और 12 countries का, और अभी जो है ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में Center for Time Use Research के नाम पे है, CTUR. If you, I have given the links to these websites in the presentation, तो जो लोग आगे जाके पढ़ना और चाहते हैं तो वो लोग उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं. तो Zalai ने actually, Alexander Zalai had introduced this, and this 12 country has expanded further now. So if you go to CTUR site, you will find lots of time use research is done in many countries across the world. इन्होंने comparative time budget research एक बनाया था ताकि हम दूसरे देशों का टाइम यूज पैटर्न्स को कंपेयर कर पाए, उन्होंने बनाया था. बट 70s के बाद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस होने लगे ऑन विमेन, देन आई वाज टेलिंग यू दैट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने, जेंडर एडवोकेट्स ने बोलना स्टार्ट किया कि ये तो एक बहुत अच्छा टूल है देन ओनली कैप्चरिंग लीजर आवर्स. दिस इज अ वेरी गुड टूल टू कैप्चर विमेन्स अनपेड वर्क. अदृश्य कार्य को हम कैप्चर कर सकते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज को एडिक्वेटली कैप्चर कर सकते हैं. अभी जो है मोर देन 100 सर्वेज आर देयर इन 65 कंट्रीज, एंड इसका एक कंपाइलेशन आया है यूएनडीपी का. I think I've shared with Dr. Jitendra or not, I don't remember, but मैं इसको आपको शेयर कर दूंगी. एक 2015 में यूएनडीपी का एक कंपाइलेशन आया है, टाइम यूज सर्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड 2015. उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने कंपाइल किया है इन 65 कंट्रीज का टाइम यूज सर्वेज, एंड हाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके का सर्वे होना चाहिए. Now this is a history, and I already mentioned that what happened in the past, why time use surveys were thought to be done for capturing women's work. And now what are these surveys? Since बहुत लोगों को नहीं पता है इस ग्रुप में, ये सर्वे सिंपली एक 24 आवर आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव समरी है आपके टाइम को. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. It is a 24-hour quantitative summary of the activities done during the day.
और on an average 2 weekdays. Either आप वीक में 2 एवरेज वीकडेज ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर, what kind of research they are undertaking and what are the objectives of the research, उसी के हिसाब से. So time use surveys are basically called time budget surveys, and they collect information on activities of people. Now they don't use the term work, because the moment you use the term work, it becomes economic. So they use the term activities, which includes market and non-market activities both. And they can explain how much time is spent on paid work, how much time is spent on unpaid work, and how much time is spent on leisure, which are like well-being activities. इसको करने के लिए फॉर्मेट है. यूनाइटेड, इफ आई डोंट नो इफ कोई इस ग्रुप में UNSNA के को जानता है, या जो लोग स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं जानते होंगे. The United Nations System of National Accounting 1993, which is called the UNSNA. उन्होंने एक एक्टिविटी क्लासिफिकेशन बनाया. Let me just directly come to that. I don't have it in my slides, but I can show you in the data like this. मतलब इंडियन डेटा के साथ में कंपेयर करके आपको बता सकती हूँ. UNSNA ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज यूज करते हैं टू कैप्चर एक्टिविटीज, उसी फॉर्मेट को एक्टिविटी कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाता है. नाउ दे हैव अ 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्चरिंग एक्टिविटीज. One is the first one, if you can see, the SNA activities, which is System of National Accounts activities, which is basically primary production activities, secondary activities, and trade business activities. Like these are called purely economic activities, जो आपके purely economic activities होते हैं, जिनका market value होता है. So that is definitely there. So that is called SNA activities, the first classification. The second classification is called extended SNA activities. If you can see here, India ने भी exactly यही classification use किया है. Extended SNA means household and related activities, which includes your cooking, cleaning, washing, pet care, child care, all these activities, elderly care, community service, volunteer service, all of these. And non-SNA activities means non-delegable activities. अगर आप देखेंगे non-SNA activities, उसमें आप देख सकते हैं learning, socio-cultural, mass media, etc., personal care, self-maintenance. So ये जो 3-fold activity classification है UNSNA का, ये worldwide many countries are following. India is also following this same pattern, which you can see in this slide. So now time use surveys follow this activity classification, and there is also an international classification of time use activities, which is called ICATUS, जिसमें आपका कोडिंग होता है, पूरा लिस्ट हो जाता है एक्टिविटीज का, और उसको आप कोड किए हुए रहते हैं. The coding is already done, and then you can see what activities are done, and you can use those codes to capture those activities. That is one way of doing it. Another thing is that you create your own codes. Like you have certain activities which may not be listed, but you can see these activities happening when you can do the coding yourself. That is also there. So this is I hope यहाँ तक मैं clear हूँ. If there is some problem, you can please put it in the chat box till now, because now I'm going a little bit technical on how to do this survey. अब तक अगर कोई doubts है, so I would be happy to clear it out. Ellina, hopefully it is going in a very smooth manner. Okay, so, fine. So no fine. problem. Okay, fine. So let me just go back quickly on the Indian data. So when we looked into time use statistics, I mean, हमने history देखा. Now we looked how activity classification is done here. Now, basically, time use statistics capture all kinds of activities. I already mentioned paid, unpaid, and leisure activities broadly. They can also capture to the extent activities means time spent in traveling also. कितने समय आप traveling में बिताते हैं, कितने समय doing nothing, that also can be captured. So it has got the potential to capture almost everything which you do in a day. 24 hours में आप क्या करते हैं, सब कुछ capture हो जाता है. Now India में MOSPI ने, Ministry of Statistics ने launch किया this 98-99 में time use survey, July to June. Now they did a pilot survey actually in these 6 states of India. You can see the states: Haryana, MP, Gujarat, Odisha, and Tamil Nadu and Meghalaya. And इनका जो result है, I mean the sample size was quite
not a very huge one, but still it was a pilot one. उन्होंने 3 तरीके का activity classification किया, which I already mentioned, UNSNA से draw करके. One is SNA activities, which includes your GDP and also includes as per 1993 SNA. And the second is unpaid, which is extended SNA, जिसको कहा जाता है. Unpaid water, which includes your unpaid work, which includes your water fuel connection also. ये भी है. And then residual time जो बच जाता है, non-SNA, sleep time, relaxation, personal activities, personal care, ये सब हो जाता है. So they captured it accordingly. These are the activities which they captured, which we already discussed. हमने ये discuss कर लिया. अब आप results देखिए, क्या मिला time use survey करने के बाद. When they did the survey, you can see very clearly if it SNA activities पुरुष ज़्यादा करते हैं. 42.54 hours men spend in SNA activities total. In comparison to women, women spend only 18.97 hours. If you look into extended SNA activities, which is household and related activities, women spend more time, 30 घंटे से ज़्यादा करती हैं, 30.46 hours, and men do only 3.19 hours. और अभी तो ये 1 घंटे से भी कम हो चुका है, कम होता जा रहा है. And when you look into leisure, non-SNA activities, you see again men are in an advantageous position. Men do 122 hours and women do 118 hours. So इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? What are we gaining from this particular data or this kind of data set? Definitely we are gaining a lot of things. One is it captures the time distribution pattern of men and women. It highlights on gender inequality, both in the household and in the labor market. Labor market में आपने देखा, household में भी आपने household division of labor देखा कि जहाँ पे 30 घंटे से ज़्यादा महिलाएं काम करी, अभी ये 40 घंटे से ऊपर हो गया है, क्योंकि बीच बीच में पायलट राउंड्स बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करते रहते हैं. Even if national survey अगर नहीं हुआ है, मतलब उसका रिजल्ट अगर नहीं भी आया है, so it is more than 40 hours women do unpaid work, और men उसके कंपैरिजन में 1 घंटा भी नहीं करते हैं. So when you look into this inequality, it definitely highlights on a huge inequality which compels women not to participate in the labor market, which prohibits them, which restricts them, क्योंकि इस burden को redistribute करने के लिए कुछ policy नहीं है. To redistribute this work, there is no policy. Like we don't have state-sponsored care homes, ताकि बच्चे महिलाओं के जो नरेगा में काम करती हैं वो रह पाए. ये नरेगा में एक्ट कहता है कि क्रैश फैसिलिटी इज मैंडेटरी, बट मेनी ऑफ यू हु माइट बी वर्किंग ऑन द ग्राउंड, कहीं पे भी एक्ट आपकी क्रैश की सुविधा नहीं है. ये these are all challenges which we have, and we don't have a state sponsored care home unlike many countries जहाँ पे state informal sector को completely state funded किया हुआ है. Even building other construction workers welfare जो एक्ट है, BOCW एक्ट है, अभी तो amalgamate हो गए, कोड्स बन गए हैं, वो सारे एक्ट्स, उसमें भी आपका सुविधा के बारे में बताया गया है, फिर भी आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को देखेंगे वहीं पे घूमते रहते हैं. So in the long run, we don't encourage women at least to, we are not addressing their well-being first. We are not encouraging them to move ahead in their careers. Upward career mobility के लिए कोई scope नहीं होता है. They loiter around under the pressure of unpaid work and do that only. And जो भी काम थोड़ा बहुत मिल जाता है part time उसको कर लेती हैं. And in the long run, we perpetuate inequality again and again. लंबे समय तक हम ये inequality को perpetuate करते जाते हैं, ना कि इसको कम करते जाते हैं. So time use surveys help you to identify these invisible dimensions of women's work. They help you to actually target your socio-cultural norms. आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जो rigid socio-cultural norms है, उनको वो highlight कर देते हैं. Now एक important aspect time use का, मैं आपको इसको डायरी को दिखाने से पहले, time use surveys context variables को भी capture करता है. And what are these context variables? Context variables means the context in which a particular activity took place. अगर आपको याद होगा जो 20th ICLS ने recommend किया, मैंने अभी जो previous slide आपको दिखाया था कुछ slides पहले, कि आपको work को अनपेड वर्क के साथ कंबाइन करना है, पेंशन के साथ कंबाइन करना है, एजुकेशन के साथ कंबाइन करना है, फिर देखना है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्यों नॉन परमानेंट जॉब चाहती हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सेम थिंग, इफ यू लुक इनटू कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स, यू सी द एक्टिविटी वाज अंडरटेकन इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट, देन यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्टिविटी.
उस एक्टिविटी को आप अगर समझ जाएंगे कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, तब आप उसकी इंटेंसिटी को समझ सकते हैं. जब आप उसकी इंटेंसिटी को समझ पाएंगे, आप पॉलिसीज बना सकते हैं उस एक्टिविटी को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, बाकी एक्टर्स इन्वॉल्व हो, ताकि आपका ये जो एक्टिविटी है वो थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हो जाओ. दैट इज द लॉजिक. एंड ऑल्सो यू नॉट ओनली पेड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सी महिलाएं अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जा पाती हैं क्योंकि ये बर्डन है. तो आप अपनी पढ़ाई, अपना स्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा कि किन कॉन्टेक्स्ट में आप वो एक्टिविटी करते हैं. सो टाइम यूज सर्वेस हैव दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज किया जाता है, जिसमें आपको पता लगेगा लोकेशन, कहाँ ये एक्टिविटी हुई, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल when the activity occurred, किसके साथ ये एक्टिविटी हुई, who were the people with whom you did this activity. I mean, for example, we do cooking. For example, someone does cooking. So cooking is done with how many people? Is it with 2 women cooking, or it's only 1 woman cooking for 5 people in the household? ये सवाल है. So when a woman, for example, cooks for 10 people in the household, then the intensity of the activity is very high. बिकॉज उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 लोगों के लिए खाना बना के बाकी एक्टिविटीज करना है, तो उसके ऊपर टाइम स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है. शी इज अंडर सीवियर टाइम स्ट्रेस, एनी पर्सन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि किन के लिए, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, कितने लोगों के लिए आपने वो एक्टिविटी किया, और क्या उस एक्टिविटी में आपको किसी ने हेल्प किया, हैज एनीवन हेल्प्ड यू. देन बेनिफिशियरी, पर्सन और इंस्टीट्यूशन ऑफ द person or institution, for whom are you doing this activity, who will be the beneficiary of your activity, if it is washing, if it is cooking, if it is any kind of activity or paid activity, who is the beneficiary. Then the motivation, whether any remuneration was received or whether it was unpaid, कोई कुछ नहीं मिला था, that is there. So ये context variables capture करना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता दूं 98-99 में जो सर्वे हुआ था इंडिया में, पायलट राउंड, जिसका भी रिजल्ट्स आपने देखा, उसमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स कैप्चर नहीं हो पाए थे. तो बाद में एक सब कमिटी बना था जिसके चेयरमैन SR हाशिम थे, और उन्होंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंदिरा हरवे भी बहुत क्लोजली काम कर रही थी, और उन्होंने बताया कि ये करना है कि आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स को अडॉप्ट करना है, क्योंकि बहुत से देशों ने इसको किया हुआ है. इससे आपको मल्टीटास्किंग और साइमल्टेनियस एक्टिविटीज के बारे में भी पता लग जाता है. सो नाउ context variables help you to understand multiple and simultaneous activities also. So जैसे for example, मैं आपको example देके इसको समझाती हूँ. जैसे कोई rural woman है, for example, she gets up 4 o'clock in the morning and she starts cleaning her house, but उठते ही वो अपना चावल का जो मिट्टी का बर्तन है वो गैस पे चढ़ा देती है या चूल्हे पे चढ़ा देती है, ताकि वो बन रहा है, ऊपर से वो जो गाय है घर में तो उसको खिला रही है साथ साथ. मतलब 2 एक्टिविटीज तो यहीं पे हो गए सेम टाइम पे. देन वो झाड़ू भी कर रही है इमीडिएटली. तो 3 एक्टिविटीज. और सिमिलरली आप एक अर्बन वुमन को इस सिचुएशन में डालिए. यू विल सी, शी इज ऑफिस गोइंग वुमन, 9 o'clock उसको ऑफिस में जाना है, तो शी हैज टू वेक अप एट 5 o'clock, और उसको अगर कोई हेल्प नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, सो सेम टाइम में गैस भी ऑन है, माइक्रो ओवन भी ऑन है, गीजर भी ऑन है, और उसका ट्रेडमिल भी ऑन है, सब कुछ चल रहा है, 4 एक्टिविटीज एक साथ चल रहा है. So that leads to actually a lot of time. I'm sure most of these women are, and ये lockdown period में तो I think ये multitasking कुछ ज़्यादा ही हो गया है for all these women. I don't know how much men have been doing. I have seen some great men doing it also, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और but India में बहुत men ऐसा नहीं करते हैं. That is a big problem because of cultural norms. Only educated, enlightened men would do. And but बहुत से ऐसे men हैं जो informal sector में हैं, नहीं करते हैं, और उतना ट्रेनिंग भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, एंड विमेन का भी नहीं है कि दे विल टेल देयर हस्बैंड्स टू प्लीज हेल्प. तो ये भी नहीं है. वो बोलेंगे उल्टा कि मत करो, आप तो परमेश्वर टाइप्स हो, आपको ये सब करना ही नहीं है, मैं ही पैदा हुई हूँ ये सब करने के लिए. सो दीज सोशलाइजेशन पैटर्न्स, यू नो, सोशो कल्चरल नॉर्म्स एक्चुअली which are enforced on women, rather I would say, to normalize these routine practices, and then they would not ask for help.
I'm sure if they ask, many men would do it. So ये जो activities, multitasking leads to a lot of time stress, and most research suggests that women who do simultaneous work are under severe time stress, and that leads to mental health issues, leads to well-being issues, and also physical health issues. मुझे याद है जब मैं कुछ फील्ड वर्क कर रही थी on a work-life balance study, I remember a gynecologist telling me that infertility issues have come up with urban women because of multitasking. क्योंकि उनका इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और कि वो इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रॉप अप हो जाता है, क्योंकि उनको खाने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह उठते ही काम चालू हो जाता है, नो वन हेल्प्स देम इन एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क, एंड दे हैव टू गो आउट टू वर्क ऑल्सो, टू द वर्क प्लेस से लौटते समय भी सोचती हुई आती है कि सब्जी क्या खरीदना है, क्या करना है, खाना क्या बनेगा. So they're like overburdened with all of these activities, and that leads to severe time stress. And time stress, in many cases, I mean, there is a lot of research, even at least if you look into many Australian scholars, they say that time stress leads to time poverty also. So if you are taxed in terms of time, you may not be available for any kind of activity which might contribute to your well-being, or paid activity rather, or activity which enhances your knowledge, or any kind of activity which would help you to grow further. उसके लिए आप available नहीं होते हैं. So time use surveys are very important to address all of these factors. So time use surveys can be independent TUS or can be non-independent TUS. So if you look into independent time use surveys, they definitely will have 3 components. I hope I'm clear about context variables. मैं थोड़ा डायरी दिखा के और examples के साथ समझा दूंगी. Maybe some the students who are there, they will be able to understand. एक background schedule रहता है. एक time diary बहुत important है for an independent time use survey, and context variables, which I already highlighted, is very important because that helps you to capture multiple activities. Because the moment you do all of these activities, your time distribution is very, very skewed, and you won't be available for any kind of activity which would add to your own well-being. ये बहुत important है. 2 तरीके के survey instruments होते हैं basically in time use surveys, either analogs or diaries. But analogs बहुत popular नहीं है because they are based on recall method. Because आपके घर पे आके कोई पूछेगा कि कल आपने क्या किया था, आप भूल जाएंगे. Half of the activities you will forget. So you won't be able to, or last week कोई आएगा बोलेगा last week आपने क्या किया था, तो definitely आपको बहुत activities याद ही नहीं होगा. But diaries are very important and very good because they start with the starting time of the activity and end with the ending time. They report actually the starting time of the activity and the ending time of the activity. That is why time diaries are very, very popular and used in many countries across the world. आजकल तो telephonic भी कर लेते हैं because of the lockdown period, and US में तो पहले भी before the lockdown doing telephonic. So different तरीका है survey instruments, but from my own experience I can say that diaries are good because I have used it in my own research. अच्छा होता है. The only thing is that you have to be watching it very carefully, and India में population size बहुत ज़्यादा है. So it becomes sometimes tedious to use a diary method. Though हमने diary method 98-99 में use किया था, to diary method to capture all the activities. उसके लिए अच्छी training चाहिए surveyors को. That's very important. Now this is a typical diary, a time diary, how it is used. और मैं इसका filling part भी दिखाऊंगी कैसे fill किया जाता है. आप इस diary को, ये एक बहुत prominent sociologist ने develop किया था, Professor Michelson, William Michelson, वो टोरंटो में है, Professor of Sociology. Now this professor has how beautifully captured context variables. आप देखिए, सुबह 4 बजे से time लिया है, 15 मिनट का time duration लिया है, 15 minutes का time interval. And what many time use scholars believe is that the shorter the time duration, the accuracy of the activity. Because ज़्यादा time duration में वो activity कुछ dilute हो जाता है. So that's why they consider the 15-minute time slot as good. But India में 98-99 में they use half an hour time slot. That was also okay, जिसका results आपने देखा. Now, if you look at this diary, you can see how here activity is reflected. Location, कहाँ activity हुआ, the context variables, कैसे ये लोग capture किया है. Persons present, who are the people who are present. Other activity, whether you did any simultaneous activity when you are doing this main activity.
The first one is main activity, and here you are doing a simultaneous activity. And then the outcome factor. What was the motivation factor of that activity? So are you getting the sense of iska fayda kya ho sakta hai? If you get to know about people, their activities, you will get to know a lot of things. I'll tell you how. Look at this filled in diary. जैसे किसी ने 7 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया है, सो रहे थे, देन हैड अ शावर, मेड ब्रेकफास्ट, देन कुछ पैरेलल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे 8 ब्रेकफास्ट के साथ रीड न्यूज़पेपर एंड गॉट माय सन ड्रेस, टॉक्ड विथ माय सन, ये भी एक्टिविटी ही है. ट्रैवलिंग करते समय न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ओके. एंड देन किसके साथ अगर थे, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायरी है जिसने एक्टिविटीज को कैप्चर किया है. तो मैं प्रीवियस डायरी में आती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है ज्यादा. दिस डायरी इज ऑल्सो गुड, बट व्हाट आई डिड, आई कैन शेयर विथ यू फ्रॉम माय ओन रिसर्च. मैंने एक और कॉलम ऐड किया और मैंने आई थिंक कुछ पेपर्स शेयर किया है जिसमें ये चीजें मैंने यूज किया हुआ है. इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है असिस्टेंस रिसीव्ड का. If someone assisted you during that activity. So I can tell you from my own work what I found. I mean, this was a study with urban working women in Delhi in 5 sectors and prominent sectors जहाँ पे women's का concentration women का होता है. So I found that mostly men helped. I mean, the women used to multitask. I mean, with main activity they would be doing at least 4 other activities. Now if you do one main activity and 4 other activity and people present are 5 to 6 people, then there is lot of time stress on you, severe time stress on you, because आपको 9 o'clock के पहले around 20 या 30 activities खत्म करके जाना होगा ऑफिस. So that was a big challenge for urban working women in Delhi NCR region, that they had to finish. I mean, those who didn't have maid, और वो भी income profiles के साथ अगर disaggregate करेंगे, जिनका 50,000 के आसपास income था, वो या 25,000 to 50,000 के बीच में था, they could afford a maid, but बाकी लोग maid नहीं use कर सकते थे lower income groups में. So they had, their diaries were so much cluttered कि आपको अगर आप उनको बोलेंगे कि एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके लिए और आपको ये इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा आपके करियर में, they will not be available. They will definitely say no to you, because if you look at the diary, you yourself will be able to understand that इसके पास तो टाइम ही नहीं है. ये तो सुबह उठ के 20-30 एक्टिविटीज करती है, फिर ऑफिस में रहता है, फिर उसके बाद शाम को अराउंड अगेन 20 एक्टिविटीज करती है. सो इट्स लाइक टू मच ऑफ एक्टिविटीज, एंड व्हेन दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज दे आर ऑफन कॉन्स्ट्रेन्ड to exercise their choices. The choices are constrained, the choices are limited. So if you find assistance received में मैंने देखा husbands का क्या था, very few of them, it must be around 2% of husbands, they helped in helping the women in helping the child to do the homework, or they helped in picking and dropping the child to the school. उसके अलावा कोई और हेल्प मेन से नहीं था. एंड जो विमेन का असिस्टेंस रिसीव में कॉलम में जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने असिस्टेंस कभी दिया है, दोज वर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और देयर ओन डॉटर्स हु वर लाइक लिटिल मोर देन 15 years or 16 years or 18 years की अगर कोई डॉटर्स थी तो वही हेल्प कर रही थी. दैट इज ओनली विमेन अगेन. So it's not men. So that's why it becomes a bit challenging, and there are a lot of case studies. I don't have that much of time to share with you all of that, but I would love to send across a lot of these writings so that you can come across case studies. आपको बहुत difficult pictures आपको दिखाएंगे, and these women, they had to go to a lower level of job because of multitasking. अपना करियर छोड़ के, क्योंकि इस करियर में इतना डिमांड था कि स्किलिंग के लिए जाना था बार बार. एक महिला मेरे जो इनडेप्थ केस स्टडी किया था, उन्होंने बताया कि मुझे स्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए इतना जाना था कि मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है. मेरा तो डायरी आप देख ही रहे, मैं इतना काम करती हूँ पूरे दिन में, एंड नो वन हेल्प्स मी. So that is why when we see time use surveys help you to address the gap of inequalities in the labor market and also household division of labor. It also helps you to look into traveling time, जो बहुत important है. बहुत जगह में मैंने ये देखा, particularly जो दिल्ली से मीरठ आते थे, मीरठ टू दिल्ली ट्रैवल करते थे. बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं, मीरठ से आते हैं.
और उस समय कावड़ का सीजन था, आप लोग जानते होंगे उस समय क्या होता है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं एंड देन उनका बसेस नहीं अप्लाई करता है. ऐसे कई कॉन्स्ट्रेंट्स थे लेडीज का पर्टिकुलरली, जिन्होंने बताया कि जब हम नेक्स्ट बस पकड़ते हैं तो हमारा छुट्टी कट होना स्टार्ट करता है क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम्स है यहाँ पे, और हम लोग लेट बायोमेट्रिक पंच करते हैं बिकॉज कावड़ की वजह से बस नहीं आती है, दूसरी बस में चढ़ते हैं तो कोई कंसिडरेशन नहीं है. इवन इफ वी सिट इन द ऑफिस टिल 6 o'clock in the evening and we have to go back and do a lot of household work. इसलिए एक लेडी ने, I can tell you about one in-depth case study which I did. She said that I'm going to quit my job, I'm going to take a VRS. She was a government employee. वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने तक के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि वो मतलब ट्रैवलिंग उनके लिए प्रेशर बन गया है. सो टाइम यूज सर्विस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रैवलिंग टाइम कितना है, सो दैट एम्प्लॉयर्स कैन रीडिजाइन पॉलिसीज which would help them to balance work and family better. ये बहुत important है. And also traveling time अगर आप capture करते हैं तो आपको roads और better infrastructure particularly hilly areas में build करने के लिए help करेगा. If you, because many women or men also, they are constrained not to go to the workplaces or not regular with their workplaces because of bad transport. So that is very important. ये मतलब time use service can help you to assess a wide range of things. Actually, it is not only used only to capture women's work. It can help you to design good transport policies. It can help you to look into women's health. If you want to, if you are a health researcher and you want to look into women's health, then आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तो breakfast वो 7:30 बजे खा रही हैं, but कई डायरीज में आप देखेंगे दिन में 3 बजे खा रही हैं. So it will help you to understand, the health issues of women also, whether what time and during breakfast, what else they're doing, and whether they're doing breakfast properly or not, all of these things. And also it will help you to, exactly identify the cultural patterns. क्योंकि आप जब geographical area से उसको relate करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जैसे कुछ tribal communities में आप देखेंगे ritual practices हैं, तो उस रिचुअल प्रैक्टिसेस वो बहुत लंबा टाइम के लिए चलता है. इट्स लाइक पीपल स्पेंड मोर देन 8 hours on those ritual practices, and during these ritual practices they are neither available for school or for employment. So if you do a time use survey, you will be able to understand what are these ritual practices and how in which community it is happening. If you look into the background schedule, what is the social group profile of this particular woman, and then there can be trade union activity, there can be women's group mobilization for sensitizing these women. बहुत कुछ हो सकता है. अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे. So that is what is the problem. So time use surveys are very important because it helps you to reflect not only the inequalities but also help you to address issues of larger well-being of both the men and women. It definitely helps you to improve your workforce estimates. It helps you to help you to redesign work-family balance policies. और मैं आपको जो बता रही थी कुछ एग्जांपल्स, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज एंड इवन द एंटायर यूरोपियन यूनियन और एशियन कंट्रीज, इन लोगों ने रेगुलर टाइम यूज इनका है, जैसे 3 साल में या 5 साल में रेगुलरली होता है, जिसके वजह से उनके पास बेटर वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज है, लाइक पेरेंटल लीव पॉलिसीज है. इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए केयर वर्क है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है. ये तभी पॉसिबल है जब उनको पता है कि उनके वर्कर्स किस तरीके के कामों में एंगेज्ड है और क्यों नहीं अवेलेबल हो पाते हैं. तो उन कामों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत से कंट्रीज ने अपना efforts और अपना policies बनाया है. Now they are also important to tell you, like we are cribbing about the declining female labor force participation. They will help you to understand why the labor force participation has declined for women, or if it is men in some country, why it has happened. And also it will give full visibility to all kinds of work, whether it is paid work, whether it is unpaid work, whether it is any kind of work which addresses well-being, which is related to well-being. So it will give full visibility to care economy, that is and help us to get better labor market estimates. So time use surveys definitely labor force surveys के साथ अगर parallel होगा, so it will definitely add lot of value to our labor force surveys, and we would be able to, like people like us who do research or who are interested in research, they would be I think using these surveys in a better way for any kind of policy research, and that would definitely help the government. So it would also help you in future, to look into issues of time poverty.
because time poverty is very prominent, and इस पे बहुत से लोगों ने काम भी किया, Indian scholars ने, including Amartya Sen and all. They have developed the capabilities approach. They have talked about the capabilities approach, Martha Nussbaum and Amartya Sen. These approaches can be better understood if we have a time use diary supplementing it, because it's very important to understand women's access to resources. You have something in place, but you are not available for that. So it's very important to understand that, and it will give a full picture of the economy for any kind of macroeconomic policy making. And some feminist scholars who would rather go a step beyond to do a valuation, कभी भी अगर valuation करना पड़ेगा, उसके लिए भी help करेगा, because इंडिया में अभी ये बहुत popular नहीं है. कुछ countries ने valuation भी करना start कर दिया कि कितना GDP को contribute करता है unpaid work. So that will also be possible when you have this. The new developments, what I can highlight is that MOSPI has, which is a positive development, MOSPI ने 19 में ये survey start कर लिया. It was supposed to end by December. It must have ended, but they have not released the report. I think it will take 1 more year to get the report, and this is a nationwide survey, not a pilot one. And इसमें इन्होंने context variables भी डाला है, and they have added all of these activities like unpaid caregiving, unpaid volunteer work, unpaid domestic service of household members, and also time spent on learning, socializing, leisure activities, self-care by household members. So all of these things, if we get, then definitely we will get an answer to why female labor force or women are not participating more in the labor market in India. Then we will have the redistribution policies. So जैसे for example, आपका अगर water या energy resources में invest करना है, इसलिए invest करना है because या आपको forest produce collection में सही marketing strategies देना है, because you know from the time you survey that they are spending most of the time in collecting water or going to the forest and collecting forest produce. So उसके लिए आपको better energy infrastructure में invest करना है, और वो तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा, when you have the time distribution patterns of both men and women reflected, then only the different ministries can work on policy. So that's very important. जैसे urban areas में World Bank ने अभी Ministry of Urban Development के साथ काम करना start किया है, of looking into how they can make gender sensitive urban development policies, जिसमें access to water is one important aspect, because urban areas में भी आपने देखा होगा बहुत सा time women पानी collect करने में spend करती है, क्योंकि टैंकर के पास खड़ी रहती हैं, है ना, या मुंबई में लोकल ट्रेन्स में पानी लेने के लिए भी जाती हैं. तो ये अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज हैं, और इनको पेड एक्टिविटीज से उनको दूर कर देता है. So that's why it's very important that we highlight all of these activities so that women get a better share actually, which they have not got. So that's all. I think I'm on time to finish the lecture, or maybe much beyond time. ये कुछ websites है जो मैंने highlight किया है, and some additional readings also I have given. I'm sorry I could not go further details because of the time constraint. But anyone who is interested, they can write to me. My email is already there in the PowerPoint slide. जिनको और ज़्यादा additional information और in-depth कुछ जानना है, they can please feel free to write to me. I'll be able to help. Thank you so much, all of you. Thank you so much for patiently listening. I would love to take questions. Thank you, Dr. Ellina ma'am. It was a very nice and systematically designed lecture given by you, an eye-opener for academics as well as social issues also. There are few questions from participants which I'm going to read. First question is from Dr. J.D. Soni. He is, I think, more concerned today. Does the time spent on cell phone and gossiping is also captured? Yes, definitely, yes. Okay, thank you. That would be a new trend, to capture, because most of the time we are spending now on cell phone, and lockdown period has again pressurized us to spend more time on laptops and cell phones now. Next question is from Arpita. She wants to know, is there any link between neoliberal development model and women's labor force participation? Can she be a little bit of, Arpita, can you be a little bit more elaborate? What exactly do you want?
we will be taking the next question. Up to that time, she will be giving us some feedback on this question. Then we will take this question. She would want to know. Neoliberal development is quite broad. Yeah. The next question is from Sarbani Sandeep. Does this study specify the working age? Does this study of yes, definitely. Time use surveys can be, disaggregated by age groups, and you can look into time distribution patterns of different age groups of men and women, and that would help you to understand also the specific age cohort where activity load becomes higher. Like I was telling you, there was a very interesting report of the NSSO in 2014 called specified domestic duties along with specified activities along with domestic duties. Us report mein, if you see, they had highlighted that women in the 30 to 44 age group spend maximum time in domestic duties. Though there is no further probing why it is like that, but these are like, there are a lot of studies around it, and that would highlight that this is an age group where women tend to have younger children. So definitely in a time use survey, you need to age bracket your respondents, and then you run the survey so that you can get the implications of different age cohorts. That's what I think the 19th ICLS has also mentioned. जब आपको मैंने previous slides दिखाया था, उसमें भी labor statisticians ने भी इसको specifically बताया है. Thank you, ma'am. Arpita again wants to know, please tell us about the impact of COVID-19 on women's labor force participation in India. Yeah, definitely. That's a very interesting question. And I've been speaking about it since in many forums. But yes, I would say that as I think thoda मैंने highlight किया था though when I was talking about it, that the self-employment has gone up, and women labor force participation during COVID-19 has negatively or rather adversely impacted on the informal sector workers. बहुत खराब situation हुआ, particularly with the domestic workers. I'm sure you must be aware there has been significant job losses, and we don't have a law or to regulate domestic workers per se in India, or we don't have adequate social security provisions which would cater to the needs of the domestic workers during this pandemic period, or migrant workers. We had seen an entire reverse migration happening in the entire country during the lockdown period, and which was quite unprecedented, but unfortunately, I mean, it had got significant negative impact on the informal sector workers because of job losses, livelihood losses, and women have been worst hit. I mean, if you look into different categories of women, I would say self-employment has been was on the rise, and women in self-employment has been worst hit by the pandemic. And women who who were engaged in certain sectors like retail, in hotels, in transportation, all of these activities where you have major concentration of women, those sectors were badly hit, and there was significant job losses, and without social security package they were nowhere actually. So women's labor force participation, the new periodic labor force survey would definitely tell us the story about what happened after the pandemic. But what we observed during discussions with various stakeholders, and a lot of studies have also come up, that without any kind of social security, it has made a significant impact on them and would further deteriorate the labor market participation of women. बहुत खराब situation हो गया है, because informal sector is worst hit by this, and we were not very much prepared. So that's very important now for the government to boost this particular sector, and that's why I think they have these plans. They have already introduced these packages for the MSME sector. So that is one positive thing which I can see with the government strategies. So that would give a little bit of boost, because there is self-employment. So अभी जो है कोविड का impact, mostly हमें जो self-employment है उस पे focus करना बहुत जरूरी है. And that is a big share, and also domestic workers and other kinds of workers. Thank you, ma'am. One participant, Pawan Shukla, requested that please guide us how to conduct survey related to time diary. Yeah, that I can tell, maybe in a separate this thing. I just highlighted, maybe I can share a study of mine, a full report, which talks about that. And maybe if Pawan can get in touch with me, I can
do that. I think that needs a special lecture, but I think this lecture has highlighted how to do the survey. And if Pawan can see some readings और दो websites में अगर आप जाएंगे और CTUR के site पे जाएंगे तो आपको guides आते हैं कैसे time use service करना है. And diary मैंने आपको already बता दिया है. That is how it is done. You have to use the diary. Thank you, ma'am. One participant, Suman Bharti, wants to ask कि भारतीय संविधान की धारा 39 के तहत समान वेतन अधिनियम लागू किया गया है. क्या सही मायने में महिला श्रमिकों और वर्किंग वुमेन के लिए कारगर साबित हो रहा है या कुछ इसमें बदलाव की आवश्यकता है? See, we have the Equal Remuneration Act 1979 जो अभी amalgamate हो चुका है लेबर कोड के अंदर. So ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से मैं आ रही हूँ हम लोग के लिए और भी क्रिटिकल है क्योंकि हम लोग इन्हीं सब पे रिसर्च ही करते हैं गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए. आई वुड से इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वो इसी जो आईएलओ का कन्वेंशन 100 है जो इक्वल राइट टू वर्क और इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको अध्ययन करते हुए बनाया गया था. बट बहुत से अगेन द ग्रे एरिया इज दैट इट इज देयर आर इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वन एंड इंडिया हैज गॉट ह्यूज इनफॉर्मेलिटी जिसके वजह से ये नहीं अप्लाई कर पाता है. दूसरी चीज, एक और टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन होता है लेबर लेजिस्लेशंस के अंदर कि 10 से अधिक 20 से अधिक वर्कर्स जहाँ होंगे तो वो आपको बहुत से और वर्कर्स जो 20 से कम होते हैं जो स्मॉल एंटरप्राइजेस में एंगेज्ड है वो आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हो जाते हैं. तो ये दीज आर लाइक टेक्निकल प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव एंड जिसके लिए हमें और काम करना है और सरकार को ध्यान से सोचना है कि हमें इनफॉर्मल सेक्टर को किस तरीके से इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के दायरे में लेके आ पाए. ये डेफिनेटली आई एग्री कि इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हुआ है और challenges बहुत ज़्यादा है. Thank you, ma'am. One question is from Dr. Mahendra Kumar Thori. He wants to ask why labor force participation ratio of women after 2006 is declining in India. Please enlighten. Yeah, I already highlighted that. क्योंकि वो डिटेल नहीं बताई because आज क्लास का लेक्चर it was focusing more on time use service. But yes, I can say that from 2004-5 onwards, it started declining because of the debates which is there in academic literature is that during that time primary education significantly improved for girl children and girl children due to our government's proactive educational policies जिसकी वजह से लड़कियां secondary education, higher education में जाना चाहें तो that's why there was a decline. Then also employment guarantee schemes were very active. The Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act 2005 and there was livelihood protection for the household जिसमें पुरुषों को मिल गया job cards जिसके वजह से महिलाएं काम करने के लिए जो कर रही थी वो फिर हाउस होल्ड में अपना हाउस होल्ड रिलेटेड काम ही करना स्टार्ट कर दी. सो देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स आल्सो इंडिया में. दिस इज वन पार्ट, these debates are by Rangarajan and all who have worked immensely on all of these areas, and there is also a group of World Bank economists who say there is a decline because India does not have long term and part time employment options. भारत में long term employment options नहीं है because हम contractualization की तरफ जा रहे हैं और जाते हुए कई सालों से जा रहे हैं एक्चुअली. तो इसके वजह से women are discouraged to continue in employment. As I was saying ना कि majority part time job मांग रहे हैं, regular part time job मांग रहे हैं. So it's like that, and then they don't have part time jobs. Part time jobs is that those jobs which are part time yet protected by social security and labor regulation. वो I am sure all of you would agree with me, ऐसा कोई job इंडिया में नहीं है जो आपको पार्ट टाइम करके सोशल सिक्योरिटी भी दे देता है. इट्स अ बिग चैलेंज. इट्स नॉट लाइक द यूरोपियन यूनियन जहाँ पे आपका पूरा पार्ट टाइम वर्कर्स भी रेगुलर वर्कर्स की तरह प्रोटेक्टेड होते हैं. इंडिया में पार्ट टाइम वर्क अगर भी है वो प्रोटेक्टेड नहीं है. जितना टेम्पररी वर्कर्स को मिलता है जो प्रोटेक्शन परमानेंट वर्कर्स को मिलता है वो टेम्पररी वर्कर्स को नहीं मिलता है. सो दैट इज व्हाई दीज आर द डिबेट्स. And I also mentioned a prominent debate. The decline would not have been so had it had been captured properly. So it was not adequately captured. That is also. But इसके अलावा ये सारे prominent reasons हैं. And one more reason is socio-cultural constraints.
women generally don't participate in the labor market because there are a lot of socio-cultural barriers and there are other issues. So ये भी बहुत से studies ने document किया है, particularly by sociologists who have done some field work and highlighted that. And apart from that, मैं कहूँगी इतना ही नहीं है, there are a lot more reasons for the decline which are not yet explored adequately. Thank you, ma'am. One question is from Arpita. Many companies are offering work from home or part-time work for women. How do you look at this? Part-time work is good in terms of, if it's a policy for work-family balance, like if the woman has taken a maternity break or has younger children for which she needs a part-time work and yet to manage household work, that should be there. But I say that should be protected by social security coverage also. It should not be, if she's working part-time, that her salary would be half, or she would not be, getting all the perks which she is supposed to get, or increments. So that happens mostly in India, कि उनको वो सब नहीं मिलती हैं, इसलिए वो opt ही नहीं करते हैं, and that's a big problem. So part-time work need to be regularized, and for this, I would say Arpita can see the new regulation of the government, the fixed term employment. अभी जो लेबर कोड में फॉर्मलाइज हो गया. सो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप कम समय के लिए 5 साल से नीचे भी अगर काम किए हैं तो 3 साल में तो भी आपको मतलब रेगुलर वर्कर्स के साथ एट पार रिकॉग्नाइज किया जाएगा. आई थिंक दैट्स अ गुड डेवलपमेंट. अर्लियर एटलीस्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत सी जगह पे थे पर उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलता था बिकॉज दे वर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. So that's why part-time work under the fixed-term employment is a good possibility, but that again needs to be, implemented adequately because ये बहुत nascent है, नया है. So I would suggest that please look at the fixed-term employment strategy of the government, of the Ministry of Labour. आपको बहुत idea उससे हो जाएगा. और Thank you, ma'am. This is last question from Dr. J.D. Soni. In time use method, does we capture the aspects of forceful engagement of females in domestic unpaid works and voluntary engagements? Does payment for household unpaid work can improve the situation, as larger objective is to improve the status of female in society? So this question has 2 parts, and I would thank you, Dr. Jitendra, for asking this question. It's a very prominent question, and that's what the feminist engagement is all about, which you have highlighted, is whether we capture forceful, and that is the main idea. I mean, that is what is the feminist engagement is all about. And if you remember, I quoted Elson when she said that caring does not mean loving doing it. So you have a tendency to capture forceful employment also, because time use survey में आपको जो डायरी जब आप देखेंगे, if you look at the diary, you will be able to see how much multitasking and how much of work is spread out. Then, and you look into just disaggregate it with the sex, with geographical location, with social groups. You will understand the socio-cultural reality, why a woman is, and added to it, if there are probing questions asked, then nothing like it. I mean, you will definitely get to know that this is something which a woman has to do because she has a 4-member family or a 5-member family, and because there is no assistance received in that column, so the pressure is on her. So it's a kind of forceful thing which you are able to, capture. That is the problem, that is the problem that we in this survey would help you to reflect your cultural realities. And that becomes a problem for many people in India. कि आपकी संस्कृति को अगर वो दिखा देगा, जो आप कहते हो कि ये आपकी अच्छी संस्कृति है, पर नहीं लगता है कि अच्छी संस्कृति है कि जो औरतों को पीछे छोड़ता है हमेशा, तो ये दिखा देना भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. तो इससे दिख जाएगा. That is true. And the second part is payment for household work can improve the situation. See, I have a different position on this, though my full respect to the feminist scholars who have talked about valuation. जो valuation है unpaid work का, that would help you to do an assessment about how much it is contributing to GDP, definitely. तो वो एक input output method है, उससे वो capture करते. That is good. I mean, I would not say it's bad to evaluate, but India में to do the valuation exercise becomes difficult because India has got a different cultural pattern. Men and women, or the society rather, is not prepared to look at this valuation positively, because they would say परिवार टूट जाएगा. अगर हम वैल्यूएट करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरा ये जो घर के लिए हस्बैंड के लिए खाना पकाया या परिवार वालों के लिए पकाया कितना पैसा मिलेगा, तो वो परिवार टूट जाएगा टाइप्स है. बट आई वुड से मेनी कंट्रीज हैव डन दैट,
And मैं एक example इसका दे रही हूँ. Australia, if you see, they have a regular time use survey. One is that. Second is that they recognize women's unpaid work through this time use survey, and the government had given some tax exemptions for men whose wives are housewives or working at home. So they had given that as an incentive. That means it's a mode of recognizing. But there is a group of feminist scholars who have pointed this out and said that ye theek hai, but in the long run, it would institutionalize care work again for women. वो ये करती जाएंगी और हस्बैंड को सैलरी में ये एक एग्जेम्पशन मिलता जाएगा. बट इसके दोनों एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड पॉजिटिव इज एट लीस्ट दे रिकग्नाइजिंग दैट there is unpaid work which is done because the man can come to work, and there's a whole lot of work which is done in the household where man can come. And the second implication is that it would also help you to redistribute that work if the woman is willingly to come to work. So it would definitely help you in advancement of gender equality, I would say. And valuation would also help you to do larger exercises, GDP contribution, and then adding an economic value, then talking about policies accordingly. So I would not be negative about it. I would say that it would also help in improving the situation. But India mein, we don't need this right now. We need to recognize first. This would be the second step. We need to first recognize women's contribution in national accounting statistics. वो पहला step है, वो ही हमने नहीं किया है अभी तक. He has also added in the question that this discrepancy of not adding the unpaid work in the national statistics, how much it is costing to the housewives? How much it is costing to the housewives? I already mentioned, no, many of them, I would like to disaggregate, the housewives who are willingly doing care work, let's leave them aside, because there are some women who would like to do housework because husbands have a considerable share of income. One is that and with that income, they are okay, and they are willingly able to, say yes to housework. But there are many women, I'm not talking about these women at all. I'm talking about those women who are languishing in the informal sector, 90% of them, who are constrained to do a lot of activities, household and related, but they should be in the labor market because they're poor. And that is why it is important to capture their work. So I would not talk about those housewives or, those high income or middle income groups who would be, doing it because बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया खुशी से कि मुझे अब बच्चों को देखना है, husband का income काफी है. So we are not talking, that is a very, very small chunk of population. Let's not forget that India has got 90% informal sector workers. So we are talking about them. So it would definitely have an impact on these workers, these people, definitely. Those who are pushed as housewives, not willingly, but zabardasti constrained ho gaye hain. Unke upar to impact hoga hi hoga. Thank you, ma'am. Thanks for answering so elaborately. Now moving ahead, I would like to recap what you have said in your lecture. I will take 2 or 3 minutes in again recapping what you said. Dr. Ellina Samantroy has delivered lecture on time use methods for understanding labor and employment data. The lecture was outlined as employment trends, यानी सबसे पहले आपने employment trends क्या हैं उनके बारे में बात की. फिर आपने बताया कि the invisibility of women's work in statistics, किस तरह से महिलाओं के द्वारा किया गया काम है वो statistics में नहीं आता है. फिर आपने बताया कि कैप्चरिंग अनपेड वर्क, हम उसको किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं, जो आपने टूल्स बताए हैं, टाइम यूज जो टूल्स हैं. फिर आपने बताया द इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इस तरह की स्टैटिस्टिक्स को जनरेट करने के, इस तरह के सर्वेज के. आपने सबसे पहले वुमेन के वर्क के ऊपर जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनके बारे में बताते हुए 2019 की रिपोर्ट के बारे में बताया जो आईएलओ द्वारा पब्लिश हुई, और उसमें एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के बारे में बताया गया, जहां आपने बताया कि देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर मार्केट. एंड ये जो गैप है ये कुछ विश्व के कुछ भागों में बहुत ज्यादा है, जिसमें मुख्य रूप से अरब स्टेट्स, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड सदर्न एशिया आते हैं. साउथ एशिया के बारे में बात करते हुए आपने बताया कि सिर्फ 27.6% पार्टिसिपेशन वुमेन्स का
वर्कफोर्स में, लेबर मार्केट में है। इसके बाद आपने यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, उनके बारे में बात करते हुए बताया कि इसके अंदर जेंडर इक्वलिटी भी एक डेवलपमेंट गोल है, जो कि इस तरह के टाइम यूज सर्वेज के द्वारा ही हम उसके अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। ILO की रिपोर्ट को कोट करते हुए आपने बताया, जो रिपोर्ट ऑन केयर वर्क एंड केयर जॉब्स द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क 2018 में पब्लिश हुई, आपने बताया कि 606 मिलियन वुमेन ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी कारण से ड्यू टू अनपेड वर्क दे आर अनअवेलेबल फॉर वर्क। और पुरुषों के बारे में बताते हुए आपने बताया कि सिर्फ 41 मिलियन ऐसे व्यक्ति हैं जो अनअवेलेबल हैं। तो देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल as far as their availability for the workforce is concerned, because women are more engaged in unpaid work. फिर आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स किस प्रकार से भारत में है, जिसके तहत आपने लेबर पार्टिसिपेशन और वर्क पार्टिसिपेशन के बारे में बात की। फिर आपने बताया कि कार्य की डेफिनेशन में नॉन मार्केट एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है जिससे महिलाओं के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आते हैं, और इट्स ए वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर वुमेन। फिर आपने मेथोडोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात किया, और आपने बताया कि जो डाटा आता है NSS के थ्रू, दैट डजंट इंक्लूड जेंडर इश्यूज इन देयर सर्वेज। फिर टाइम यूज सर्वेज क्या है, इनके बारे में बताया, इनकी शुरुआत कैसे होती है। इसमें आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिशियंस के बारे में बताया, और आपने बताया कि अर्ली डेवलपमेंट जो हुआ वो फिनिश सर्वेयर इरिस नीमी के द्वारा किया गया था, और बाद में सिस्टमेटिक टाइम यूज जो सर्वेज हैं वो अलेक्जेंडर सजलाई के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने 12 देशों का सर्वे किया, और बाय 1970s these surveys become good tools for capturing unpaid work of women. फिर आपने टाइम यूज सर्वेज का क्या महत्व है उसके बारे में बताते हुए बताया कि they are aimed to provide information on the activities people perform. इसके तहत आपने 3 प्रकार की एक्टिविटीज को बताया है, जिसमें एक SNA, एक एक्सटेंडेड SNA और एक नॉन SNA एक्टिविटीज हैं। कुछ डाटा के द्वारा आपने बताया कि जो नो एक्सटेंडेड SNA एक्टिविटीज है, जिसमें मुख्य रूप से अनपेड वर्क आता है, उसमें फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा होता है, और SNA और नॉन SNA जो एक्टिविटीज है उनमें मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। और इसी में आपने एक पर्टिकुलर सर्वे जो है उसके बारे में जिक्र किया, जो एक सप्ताह का सर्वे था, उसमें साफ दिखाया कि किस प्रकार से पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंट एक्टिविटीज में होता है। फिर आपने टाइम यूज स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में बात करते हुए आपने बताया कि इसमें कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को भी शामिल किया जाता है। फिर आपने टाइप्स ऑफ टाइम यूज सर्वेज के बारे में बताया, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंतर्गत डायरी सर्वे यानी टाइम डायरीज एंड स्टाइलाइज्ड एनालॉग्स होते हैं, और अंतिम जो आपका भाग था आपके डेलिब्रेशन का, उसमें आपने स्कोप ऑफ टाइम यूज सर्वेज बताया कि किस प्रकार से टाइम यूज सर्वेज का उपयोग करके हम इनको हमारे जो जेंडर इक्वलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। मुख्य रूप से आपका जो फोकस था वो ये था कि महिलाओं के द्वारा किया गया जो अनपेड वर्क है वो किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स में लाया जाए ताकि एडवांसमेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी किया जा सके। This was a very fruitful and very systematic lecture given by you. We are highly thankful for your this presentation. Thank you, ma'am. Now it's over to Jitendra Dison. It's a pleasure actually, and Dr. Ravindra ji has done it so nicely. I mean, all points got highlighted. I was shocked to hear actually, and I was like, it was such an overwhelming response actually, and he's done it so nicely. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Ellina, for nice deliberation, and thank you, Ravindra, for a very nice moderation. Ellina, you have really touched upon a very important issue, which is very prominent and very important for the Indian society. At the same time, you have given a new dimension to this entire research methodology course, because we really need to have a lecture on this time use methods in every course which is dedicated to research methodology, because not only for addressing the gender issues, this can be used for some other purposes also. Like, but we are very happy that we have touched a new issue, and you have dealt with this with a very a systematic manner. You have even rather than delivering a lecture, you have taught us today like that how we can use it for
our research in future. So you have taken us as students. So we are very happy that you have covered all dimension, all aspects of time use this methods. We are very happy to have you here. And I'm seeing you after almost 2 decades, you know. So it's really a nice experience to see you here on this board. I'm giving thanks from the entire team, but for the formal vote of thank, I request Dr. Monica Bistranjan to give formal vote of thanks. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. On behalf of the Research Methodology Online Orientation Course Committee, I am Monica Bistranjan, delighted to give a vote of thanks. It is challenging for me to express sincere thanks to the speaker and the participants, but it is my privilege to thank Dr. Ellina Samantroy for her insightful discussion on the topic time use method. Madam, your knowledge and ideas have enlightened us and enriched the dynamics of today's discussion on time use method. This session has helped in understanding to use this method to capture the unpaid and unpaid women's activities in India. This lecture will help many participants to use the time use statistics in their PhD research topics as well as in their academic career. Thank you, madam, for teaching us the concepts of SNA, non-SNA, ESNA, and critically understand the women's role in the society. I like to thank Dr. Ravindra Kumar for moderating this discussion in so organized, timely, and effective way, and for summarizing the discussion at the end. I also like to thank Dr. Jitendra D. Soni and Dr. Renu Punia for managing and coordinating this online course and consistently helping all the team members and the participants for more integration and participation in this program. I extend to thank all the participants for your regular and active participation, especially for today's lecture. We as a team hope that all of you are finding these discussion series exciting and informative. We are trying to facilitate all the possible methods and techniques for constructive lecture series, focusing on your research interests and research areas. Last but not least, I extend my thanks to the organizers, particularly the technical support team, for their consistent support, smooth communication, as well as providing timely information on several social media platforms. Now, the topic of our upcoming discussion will be on mapping as an investigative tool in social science research by Professor Anuradha Banerjee. Professor Anuradha Banerjee is the professor at the Center for Study of Rural Development, CSRD, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We request you to kindly join us and participate in our next discussion on Saturday, 17th October 2020 via the Zoom platform. Till then, goodbye. Have a lovely evening. Thank you, Monica. And now, with the due permission of our guest speaker, I want to end this meeting here. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.